बताइए। टू अंडरस्टैंड फॉरेन पॉलिसी। ओके, देन। हम्म। ओके, देन। IR theories provide lenses through which we can view the interactions between countries and international organizations, sir. Like they're like analytical frameworks. ओके, देन। बिकॉज countries always behave differently. Some countries fight, some cooperate, some are rich, some are poor. Clear? Because of this, how are they going to behave? So their behavior will also be different. है ना? So to understand global chaos, for that we need IR theories. है ना? International relations is the modern discipline. It is the youngest discipline in social sciences. है ना? It came out from political science. Clear? And its story. अब इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज पॉलिटिक्स अमंग नेशंस. पॉलिटिक्स अमंग नेशंस. अब जब हम बात कर रहे हैं नेशंस की, तो ये नेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, Fair. 1648. है ना? वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम के. तो कॉन्सेप्ट जब नेशन का ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आया है, सो द बैकग्राउंड ऑफ आईआर आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम वेस्टफेलिया. क्लियर एवरीवन? ड्रॉ कर दीजिए. क्लियर? तो राइट डाउन. To make the sense of global chaos, to make sense of global chaos, scholars created theories. Scholars created theories to explain global events. To explain global event, like why war happens, why
wars happen, why peace is necessary, comma, how power works, etc. तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हर थ्योरी जो है इंटरनेशनल रिलेशन में, इट वाज क्रिएटेड आफ्टर अ मेजर ग्लोबल इवेंट. समझ में आ रहा है? लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. The most important theory in IR came called based on liberalism and idealism. क्लियर? तो ये थ्योरी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट हो जाएगी, है ना, बेस्ड ऑन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. जैसे ही सेकेंड इवेंट होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्कॉलर्स कौन सी थ्योरी को चैलेंज करेंगे? लिबरलिज्म. वुड्रो विल्सन को चैलेंज कर दिया जाएगा, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलिज्म एंड आइडियलिज्म, वन big organization was created called as League of Nations. Clear? And then here realist will come, and in this the most important event which was started after second world war, that is cold war, है ना. then जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होगा 1991, then realist will be criticized. तब कौन आ जाएगा? नियो क्लासिकल थिंकर्स. समझ में आ रहा है? एंड देन आफ्टर 9/11 अटैक, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाएंगे. समझ में आ रहा है? सो हर एक इवेंट के बाद एक नई थ्योरी आएगी और पिछली थ्योरी को क्या किया जाएगा? क्रिटिसाइज किया जाएगा. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज हाउ IR works. Now, the first important thing in international relation, that is Treaty of Westphalia, when in 1648. This brought the concept of nation state system, and second important thing, they brought the concept of sovereignty. Clear? Now this has created Westphalian order. Westphalian order क्या है? It is like बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं, है ना, एंड दोज 5 to 6 कंट्रीज आर पावरफुल, एंड इट इज लाइक मल्टीपोलर ऑर्डर. समझ में आ रहा है? सो दिस रिप्रेजेंट्स multipolar order. Now nations are created, but these nations are based on monarchy. Clear? Like Britain, France, then Germany, Italy, US, है ना. So different different nations were there, है ना. Multipolarity was there. Now during this time period there were only regional conflicts हैं. That means these powers, they are fighting among themselves, है ना. So regional conflicts were there. That means European conflicts. So when we say international relation is politics among nations, so it means politics among European nations. समझ में आ रहा है? ये पॉलिटिक्स के बीच में थी, यूरोपियन नेशंस के बीच में. एंड देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, है ना. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
also started in or among European nations. This much is clear to all of you, है ना? But because European nations were dominant in the world, so the conflict of European nation became global in nature. समझ में आ रहा है? इसीलिए जयशंकर का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स आर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, बट इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स और एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स आर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स. This much is clear to all of you. So European nations. So after that, one liberal world order was established, है ना. लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश किया. किसने स्टैब्लिश किया था? वुड्रो, यस, वुड्रो विल्सन. हिज 14-point program which gave the concept of new world order. Clear? अब सवाल ये उठता है, what is this new world order? So Woodrow Wilson said it is based on liberalism. Liberalism is the philosophy of capitalism. If the new world order is going to establish based on liberalism, so who will be the boss? Capitalist world, that is United States of America. So in 1919, they have created one organization called as League of Nations, based on 14 points of Woodrow Wilson. Now, that is why it is said that in 1919, the first chair of international relations was established in University of Wales. And this chair is also called as Woodrow Wilson Department or Woodrow Wilson Chair. कहाँ पे establish हुआ था? University of Wales, 1990. So international relation was always been dominated by the capitalist world, that is United States of America. और foreign policy किसकी बताई जाती है? Each and everything from the perspective of United States of, है ना? Now, in 1939 to 1945, Second World War was there, है ना? And because of this, there was change in वर्ल्ड ऑर्डर. अब ये वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा यूएस के प्रेसिडेंट ने ही यूज किया है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किसने यूज किया? वुड्रो विल्सन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. कोल्ड वॉर के बाद जॉर्ज बुश. समझ में आ रहा है? दिस वर्ल्ड ऑर्डर, दिस टर्म इज यूज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट्स, है ना. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Woodrow Wilson. Second World War, Franklin D. Roosevelt. Cold War, end of Cold War, clear everyone? And this world order was always on the philosophy of capitalism. This much is clear to all of you. This is based on to promote free trade, जो यूएस हमेशा से चाहता है. Clear everyone? The main motive of world order is to promote free trade. अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा पीस प्लान को अप्रूव कर लिया ना, ट्रम्प के, है ना. और उस पीस प्लान में एक अथॉरिटी बनाई गई है, बोर्ड ऑफ पीस अथॉरिटी, और उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? डोनाल्ड ट्रम्प को, कि वो पीस को देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है. और गाजा का रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसको मिलेगा?
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ट्रम्प की ही कंपनी है ना। और उसके लिए एक आईएसएफ बनाएगा, बोर्ड ऑफ पीस, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसका काम है वेपन्स को कलेक्ट करना हमस से और हमस को डिसमेंटल करना, है ना। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्लियर? तो जब भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यूज में आए, समझ जाना ये यूएस की साजिश है। क्लियर? ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ कर लिया था सभी? डन। तो व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इट इज नथिंग बट द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। क्लियर? और इन थियरीज को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इनको अप्लाई भी करना है। क्लियर एवरीवन? और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अब मेंस के क्वेश्चन और आंसर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना। हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पीएसआईआर के। तो आप वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्लियर? और यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूछते हैं, तो लिस्ट ऑफ साइट्स अभी तक जितने भी हैं वो भी अपलोड कर दिए गए यूनेस्को के, वो भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। क्लियर? मराठा फोर्ट्स एंड ऑल इस साल जो इंक्लूड किए गए, है ना। तो ये सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा। क्लियर एवरीवन? तो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी दिस बिलियर्ड बॉल मॉडल, है ना, कि कैसे ये पावरफुल कंट्रीज आपस में कोलाइड करेंगी। क्लियर? ड्रॉ कर लीजिए। The earlier, the realists will criticize neoclassical. The neoclassical will criticize realists. Neoclassical will criticize realist, and after the 9/11 attack, they will be criticized by social constructivist. Okay, sir. So for the first time, nation state system was recognized in Treaty of Westphalia. Clear? तो अब आपको एक चीज याद रखना है, दैट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इट इज? मल्टीपोलर, which is also called as Westphalian order. After First World War, it world order was based on liberal institution like League of Nations. After Second World War, the world order became bipolar, that means two superpower. And after Cold War, unipolar. After 9/11 attack, again multipolar. This much is clear to all of you?
Done? ड्रॉ कर लिया? Done? Which one? First chair of IR, which is also called as Woodrow Wilson chair. Department. Done? Multipolar. Liberal order. है ना? After Second World War, bipolar. है ना? Done? Write down. International relations is the study of relationships among nations. Relationships among nations. Study of relationships among nations. Full stop. It began with the Treaty of Westphalia. It began with the Treaty of Westphalia. Began with the Treaty of Westphalia in 1648. 1648, which ended how many years of war? 30 years of war, which ended 30 years of war in Europe. 30 years of war in Europe, and formally recognized
nation state system. Recognize nation state system. है ना? नेशन स्टेट सिस्टम जो है it is based on fixed territory, centralized authority, sovereignty. ड्रॉ कर लीजिए, है ना? अच्छा, व्हाई सोवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? इट इज फंडामेंटल, है ना? इंटीग्रिटी ऑफ एनी टेरिटरी इज फंडामेंटल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. वॉर करते हो तो आप किसी कंट्री की सोवरेनिटी को क्या कर रहे हो? वॉयलेट कर रहे हो. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लिख लीजिएगा, सोवरेनिटी इज द फंडामेंटल थिंग. It is the fundamental thing in international politics. In international politics. Full stop. International relations. Change the paragraph and write down. International relations as a discipline. International relations as a discipline is youngest in nature. Is youngest in nature. Full stop. The first chair or department of IR. First chair or department of IR was established in University of Wales, established in University of Wales in 1919. In 1919, also known as Woodrow Wilson Chair. Also known as Woodrow Wilson Chair. Clear? Now, why IR is called as American Social Science? Why international relations, है ना, called as American Social Science? अभी मैंने बताया भी है, कॉमन सेंस बस थोड़ा सा लगाना है. बताइए, why it is called as American Social Science? अभी आप बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ेंगे, वुड्रो विल्सन, केनेथ वॉल्ड्स, समझ में आ रहा है, अलेक्जेंडर वेंट, क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स. सो फर्स्ट थिंग इज इट इज डोमिनेटेड बाय अमेरिकन स्कॉलर्स, है ना? पहला रीजन क्या है? डोमिनेटेड बाय अमेरिकन स्कॉलर्स. Second, this IR revolves around American foreign policy. है ना? तो अब आपको एक डिफरेंस पता चल गया है. पॉलिटिकल साइंस ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड यूरोपियन सिस्टम, IR ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड अमेरिकन सिस्टम. समझ में आ रहा है? बिकॉज यस, इंस्टीट्यूशंस, और पहली बार जो वर्ल्ड ऑर्डर, इन सब चीजों की बात कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्लियर एवरीवन? ड्रॉ कर लीजिए. Write down, after First World War, Woodrow Wilson
Woodrow Wilson introduced New World Order. After First World War, Woodrow Wilson introduced New World Order, New World Order with New World Order with League of Nations, collective security, free trade and self-determination. Free trade and self-determination. है ना? Now, if I ask you, what is the purpose of international relations? Purpose of IR? What is the purpose of IR? Peace. समझ में आ रहा है? Purpose of international relation is peace. That is why international relation is divided into various phases. Phase 1 is called as Westphalian phase, 1648 to 1919. Clear? Till the end of First World War. Draw कर लीजिए. है ना? So what is the purpose of IR? Peace. है ना? Now why peace is concerned? कॉमन सेंस यूज करना है. कॉमन सेंस यूज करना है. बताइए. बताइए. Why peace is concerned? यहां पर तो 30 years है ही नहीं, और पीस की बात यहां पर की भी नहीं गई है. पीस की बात यहां पर की जा रही है. यस, एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Why peace is concerned? Experience of First World War. समझ में आ रहा है ना? Now, so in 1919, because of Woodrow Wilson, first chair was established. First chair of IR. So Woodrow Wilson is considered as father of international relations. समझ में आ रहा है? Woodrow Wilson is considered as father of IR. क्लियर है ना? फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाई? Because Woodrow Wilson has created liberalism, school of IR, based on his 14-point program. This is the reason. समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्होंने कौन सा स्कूल बना दिया IR में? लिबरल स्कूल. क्लियर एवरीवन? लिबरल स्कूल. क्लियर?
अब ये 14 पॉइंट स्पीच इन्होंने कहां पर दी थी? यूएस कांग्रेस में, है ना? व्हाट वर द रेलिवेंट पॉइंट्स इन 14 पॉइंट प्रोग्राम? और विद रेस्पेक्ट टू आईआर बताना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हिज स्पीच। अरे यूएस के प्रेसिडेंट है, सबसे पहली चीज तो बोलेंगे फ्री ट्रेड। समझ में आ रहा है ना? सेकंड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यही इंडो पैसिफिक में भी है। क्लियर? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। एंड देन यूएस हमेशा एक चीज बोलता है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, है ना? ये कॉमन पॉइंट है यूएस की फॉरेन पॉलिसी के, और रूल यही वॉयलेट करते हैं, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। क्लियर एवरीवन? वाई? तो अब यूनाइटेड नेशन में आएगा ना रूल ऑफ लॉ चार्टर, अभी लीग ऑफ नेशंस आएगी। अब इन्होंने क्या बोल दिया? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब फिर हम यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाई? हु इज गोइंग टू मेक रूल, है ना? तो वुड्रो विल्सन विल से देयर विल बी वन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिबरलिज्म कॉल्ड एज लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन विल मेक रूल्स। समझ में आ रहा है? सो हु इज गोइंग टू मेक रूल? हु विल मेक? दैट इज लीग ऑफ नेशंस, है ना? Now what is League of Nations? League of Predecessor Nation क्या है? organization to the UN. Okay, it was the first international Organization. political organization. First international political organization. First international political organization. Clear everyone? What is the importance of international organization? What is the importance of international organization? बताइए। प्रमोट फ्री ट्रेड। ओके ओके, देन तुम सभी लोग प्रोफेसर वाला आंसर देते हो, डिप्लोमेट वाला आंसर ही नहीं दे So रहे। what about global cooperation? एक और प्रोफेसर ने आंसर दे दिया, बताइए, है ना? दिस Second sum. in the world countries are like animals who always fight with each other, है ना? That means international sphere is like a jungle. So Woodrow Wilson ने कहा we need to convert this jungle into a zoo. सबको एक जगह क्या करो? बंद करो, है ना? और वो जगह कौन सी होगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, according to Woodrow Wilson, we need to convert
the jungle of international relations. We need to convert the jungle of international relations into zoo. Into zoo. So international organization will provide platform to resolve disputes. Provide international or provide platform to resolve disputes. है ना? Resolve disputes. है ना? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे करना है, ये नहीं कि लीग ऑफ नेशन में बुलाया और कहा कि चलो मोदी जी और सामने शी जिनपिंग खड़े हो जाए रेसलिंग में, एक दूसरे को मारो, जो जीतेगा वो कंट्री जीत गई, है ना? थ्रू डायलॉग्स. Otherwise war is the only option. Otherwise war is the only option. Clear everyone? अब ये जो मॉडल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल अभी तक क्या था वेस्टफेलियन ऑर्डर में, लाइक देयर आर सम कंट्रीज, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ऑल दीज कंट्रीज आर देयर, है ना, रशिया. नाउ अब हुआ ये कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नेपोलियन, फ्रांस बिकेम अग्रेसिव, है ना, एंड नेपोलियन वाज कंट्रोलिंग 2/3 ऑफ यूरोप. ही चेंज द मैप ऑफ यूरोप, है ना. तो अब नेपोलियन और यू कैन से फ्रांस बिकेम एग्रेसर. तो फ्रांस वाज वेरी पावरफुल. अब इफ फ्रांस इज गोइंग टू हैव अ वॉर विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कैन नॉट फाइट विद फ्रांस डायरेक्टली, क्योंकि देयर इज नो बैलेंस ऑफ पावर. अब अगर नेपोलियन को रोकना है तो एक उसी के बराबर हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा आर्मी में. तो क्या होगा, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, ऑल दीज कंट्रीज विल कम टुगेदर टू बैलेंस फ्रांस, है ना. और ये हुआ भी 1815 में जब नेपोलियन को हराया गया. ऑल दीज कंट्रीज केम टुगेदर इन द नेम ऑफ विच कांग्रेस, वेना कांग्रेस, है ना. इन दिस वे दे हैव एस्टैब्लिश्ड बैलेंस ऑफ पावर अगेंस्ट द एग्रेसर. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो वुड्रो विल्सन ने कहा कि अब हम बैलेंस ऑफ पावर पे फोकस नहीं करेंगे, हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है. if any country, suppose France, है ना, if they are going to violate the rules, then this organization is going to, all the members of this organization is going to control France. This is called as collective security. This much is clear to all of you. इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी. कलेक्टिव सिक्योरिटी मींस इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर इज वन कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. कलेक्टिव का मतलब वेयर ऑल द मेंबर, ऑल द कंट्रीज आर members and they are going to stop the aggressor. समझ में आ रहा है? So this is how Woodrow Wilson replaced the concept of balance of power with collective security. Clear everyone? लिख लीजिएगा, write down. तो आज अगर हम देखें ग्लोबल पॉलिटिक्स, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर टू स्टॉप चाइना? क्वाड. What is the example of collective security? United Nations Organization. Clear everyone? Write down. Woodrow Wilson replaced balance of power, replaced balance of power, replaced balance of power by collective security. By collective security. क्लियर एवरीवन? ठीक है.
अब एक चीज बताइए कि इफ बैलेंस ऑफ पावर इज देयर, all these countries are there, Russia, US, Britain, France, चाइना, इंडिया। अब अगर ये सारी कंट्रीज हैं और यहां पर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देयर इज ओनली बैलेंस ऑफ पावर, तो अब अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो कोई ग्लोबल रूल्स नहीं होंगे, समझ में आ रहा है, ग्लोबल ट्रीटीज नहीं होंगी। रशिया एंड यूएस के बीच में क्या चल रहा है, राइवलरी। यूएस is creating nuclear weapons, Russia is also creating nuclear weapons, then Russia created ICBM, US created hydrogen bomb, है ना। और ऐसे करते करते रशिया ने 7500 वेपन्स बना लिए और यूएस 6500 पर है। क्लियर। तो यूएस को किस लेवल पे पहुंचना है, 7600 करना है। क्लियर। तो इस सिनेरियो में डू यू थिंक इज देयर एनी चेक एंड बैलेंस ऑन आर्म्स रेस? नो। बट अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहेगा देयर शुड बी डिस आर्मामेंट, है ना। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर वेपन्स आफ्टर 6900, और अगर इससे ज्यादा है यू नीड टू डिसमेंटल योर वेपन्स। समझ में आ रहा है, ये एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चल रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का मतलब क्या है, टू क्रिएट चेक एंड बैलेंसेस। इससे क्या होगा, टू लिमिट आर्म्स रेस, है ना। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी देन देयर विल बी नो चेक एंड बैलेंस, देन देयर विल बी मोर आर्म्स रेस एंड प्रोपेंसिटी ऑफ द वॉर विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है, यूनाइटेड नेशन है तो एक ग्लोबल नैरेटिव भी ये क्रिएट करेंगे, प्रेशर भी क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है, इन दिस सिनेरियो दे आर गोइंग टू लिमिट आर्म्स रेस। और अगर यूएन नहीं होता तो कोल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्रीज में तबाही मच गई थी। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्लियर, राइट डाउन, लिख लीजिएगा। द एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी टू चेक द आर्म्स रेस, the advantage of collective security to check the arms race full stop. More arms means more propensity, more arms means more propensity or more probability of war, or more probability of war. So Woodrow Wilson wanted to make world safe, make world safe for democracy, wanted to make world safe for democracy. So indirectly he is trying to promote what, democracy, है ना। वो अपने पॉइंट्स, अपने स्पीच से क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। अब जो डेमोक्रेसी है, हमने ऑलरेडी सेक्शन ए में पेपर 1 में पढ़ा हुआ है, डेमोक्रेसी इज द स्कूल, और यू कैन से डेमोक्रेसी इज द थ्योरी अंडर विच स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लिबरलिज्म। समझ में आ रहा है, डेमोक्रेसी इज द थ्योरी अंडर लिबरलिज्म। लिख लीजिएगा, डेमोक्रेसी इज द थ्योरी अंडर लिबरलिज्म। क्लियर। तो what is the first school in IR
अभी बताया है, बताइए। लिबरलिज्म, है ना? एंड लिबरलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ capitalism, which means United States of America. Clear? So if this is the philosophy of United States of America, then with this, what is the aim of US? What is the aim of US? US का aim क्या है? वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था? टू स्टैब्लिश न्यू वर्ल्ड order. This is the favorite phrase for US presidents. New world order. है ना? This concept is highly respected by American president. Clear? New world order. Clear? And in a similar way, you will see that the major component in Woodrow Wilson's 14 point also was the concept of New World Order. Clear, everyone? This much is clear to all of you. Now tell me, what is the underlying idea in New World Order? इतना समझ में आ गया? What is the underlying idea in New World Order? It should be based on capitalism. है ना? ये किस पर बेस्ड होना चाहिए? कैपिटलिज्म. इससे क्या होगा? दे आर गोइंग टू क्रिएट फ्री ट्रेड एंड क्रिएशन ऑफ मार्केट. क्लियर? ये मेन रीजन है. दिस इज द अंडरलाइंग आइडिया इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. Clear? Now, who will be the king if capitalism is the basis of new world order? United States of America. Clear? तो इससे फायदा किसको होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लिख लीजिएगा, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यूएस. दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यूएस. So in this way, new world order or new world order is the discourse of US hegemony. It is the discourse of US hegemony. क्लियर? तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये भी होता है, दैट इज द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर. लिख लीजिएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑल्सो मीन लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर.
and it replaced old world order, that is Westphalian order. It replaced old world order, that is Westphalian order. Now, Westphalian order. When it was started? 1648. Where it was started? In Western यूरोप, है ना? ये कहां पर शुरू हुआ था? वेस्टर्न यूरोप में, है ना? अच्छा, वेस्टफेलियन ऑर्डर क्या डिनोट कर रहा है? इट डिनोट्स द एंड ऑफ रोमन एम्पायर एंड एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम. Clear? That is why till First World War you will see various empires, Ottoman Empire, Russian Empire, French Empire, ये सारे empires हमें दिखेंगे, है ना? Because that was based on Westphalian order. Clear everyone? So write down, during this time international politics was actually the regional politics, was actually the regional politics, actually the regional politics, that is the politics among European nations, politics among European nations. What is the meaning of regional politics? बताइए, what is the meaning of regional politics? Particular region or politics at the continental level. Clear? लिख लीजिएगा. It means politics at continental level. Politics at continental level. है ना? So during this time period, it was basically European politics. It was basically European politics, which means politics among European nations. तो यूएस कहां था इस टाइम पीरियड में? यूएसए वाज इन आइसोलेशन. यूएस वाज इन आइसोलेशन, है ना? यूएस की हिस्ट्री क्या है? यूएस बिकेम नेशन इन 18th century, 1787, है ना? फिर उसके बाद आप देखेंगे इन 19th century, so US also started industrial revolution and US became economic power. So in 19th century, from 1815 to 1915, यूरोप वॉज इन क्राइसिस. यूरोप क्राइसिस में, वॉर चल रहा है यूरोप में. तो यूएस के लिए ये बेनिफिशियल है. यूएस मेड यूरोप एज इट्स मार्केट. यूरोप किसका मार्केट हो गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, है ना? अब ये क्राइसिस क्यों है? क्राइसिस इसलिए बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वेरियस रेवोल्यूशंस टुक प्लेस. French Revolution of 1830s, which is also called as middle class revolution. French Revolution of 1848, which is also called as working class revolution. Then birth of a Germany as a nation in 1871. Birth of Italy as a nation in 1870. So whole Europe was in crisis. समझ में आ रहा है? तो इस टाइम पीरियड में जितने भी कैपिटलिस्ट होंगे यूरोप के,
उन्हें सेफ डेस्टिनेशन चाहिए, वो सब कहां मूव कर जाएंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? इसीलिए यूएस क्या बन जाएगा? यूएस विल बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? लिख लीजिएगा, राइट डाउन। US was following the policy of isolationism. अच्छा, इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? When US was in isolation, Monroe Doctrine. This is called as Monroe Doctrine. लिख लीजिएगा, US was following the policy of isolationism, also known as Monroe Doctrine of US, also known as Monroe Doctrine of US. चाइना ने भी फॉलो की थी मुनरो डॉक्ट्रिन। कब? डेंग जियोपिंग। चाइना बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है उस टाइम पीरियड में। चाइना किस पर फोकस कर रहा है? अपने पे फोकस कर रहा है। एंड इन 2000 चाइना बिकेम मैन्युफैक्चरिंग हब। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, जस्ट लाइक चाइना वाज अंडर डेंग जियोपिंग, जस्ट लाइक चाइना वाज अंडर डेंग जियोपिंग। So if I ask you what is Monroe Doctrine? Focus on internal development without involving in external affairs. समझ में आ रहा है? What is Monroe Doctrine? Focus on internal development without involving in external affairs. लिख लीजिएगा, Monroe Doctrine. Focus on internal development without getting involved in the conflict, without getting involved in the conflict of European nation. क्लियर? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वेदर यूएस आइसोलेशन वाज कंप्लीट आइसोलेशन? बताइए। No, sir. No, sir. Then Because they heavily involved themselves with affairs of the Southern American countries and around itself, like Canada, Mexico, and नहीं, South मेरा American. क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक ओवरऑल द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, वेदर यूएस आइसोलेशन वाज कंप्लीट आइसोलेशन? No, they still interfered in other world in outside of their country. Like in the case of Japan, Commodore Perry went to open the markets of Japan. That was one example. ओके, Then there was also their trade with China. There हाँ, also US had interfered there. Uh, then there was also Philippines, which almost became a semi-colony for the US. ओके। Uh, तो कहने का मतलब then ये है, तो कहने का मतलब ये है दैट यूएस आइसोलेशन वाज लिमिटेड इन द सेंस इट वाज ओनली लिमिटेड टू द पॉलिटिकल स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर में यूएस बाकी वर्ल्ड के साथ क्या कर रहा था? इंटीग्रेट कर रहा था। लिख लीजिएगा, राइट डाउन, यूएस involvement was limited to economic sphere. US involvement was limited to economic sphere, but not politically or militarily. Not politically or militarily. Clear? So where was US at that time? US was the safest place for investment and manufacturing hub. समझ में आ रहा है? Why? Because whole Europe was in 100 years of crisis. लिख लीजिएगा, US was the place of investment. US was the place of investment and the biggest center, place of investment and the biggest center for manufacturing. For manufacturing. Full stop. US will not involve in European affairs. US will not involve in European affairs
will not involve in European affairs, but US will actively safeguard its hegemony, but US will actively safeguard its hegemony, in the region, full stop. US will not tolerate the presence, US will not tolerate the presence, of any European power, will not tolerate the presence of any European power in its backyard, अब इसको इंडिया के साथ कंपेयर करो. India tried to present in international affairs during the time period of Nehru, है ना? But during the time period of Indira Gandhi, India kept itself in isolation, है ना? India was only limited to USSR, था कि नहीं था? So during the time period of Indira Gandhi, India followed Monroe Doctrine. Clear everyone? लिख लीजिएगा comparison with India. During Pandit Nehru, India played active role during Pandit Nehru. India played active role in world affairs. Full stop. During Indira Gandhi, India followed India version of Monroe Doctrine. India followed Indian version of Monroe Doctrine, where India reduced its role in global affairs, but tried to build hegemony in the region. Clear? But India के रिलेशन किसके साथ थे? India and USSR. Why this axis was created? Why these relations were created? Because India needs to manage the balance of power against whom? Against US, China, Pakistan axis, है ना? क्योंकि 1971 में ही US China Pakistan axis was established. That is why India had to integrate with whom? USSR. This is called as balance of power. This much is clear to all of you. And this role we have already seen, like in 1971 war, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ. So India has actually signed the treaty with USSR called as Treaty of Friendship, Peace and Cooperation. So United States of America was against the creation of Bangladesh, and US has sent the nuclear ship, है ना, पूरा एक एयरक्राफ्ट के साथ भेज दिया था. So USSR came to save India, and at that time जैसे US का शिप आ रहा था तुरंत ऊपर आ जाता है USSR का न्यूक्लियर सबमरीन. समझ में आ रहा है? So US had to go back. Clear? So this balance of power was created in 1970s. Clear everyone? तो लिख लीजिएगा, राइट डाउन. India also created balance of power against China Pakistan US axis. Full stop.
In this way, India's policy of non-alignment, just remained as ritual. Full stop. India became de facto ally of USSR. And to maintain its regional hegemony, India also incorporated Sikkim in 1976. To maintain its regional hegemony, India also incorporated Sikkim in 1976. और जैसे ही हमने सिक्किम को इंटीग्रेट किया, चाइना को फिर गुस्सा आएगा, है ना। 1975 में कौन सा बैटल होता है इंडिया और चाइना के बीच में? अरुणाचल प्रदेश को लेकर। बताइए। Which battle took place in 1975? अब देखो, तुम्हारी गलती यही है, तुम सिर्फ 1962 वॉर पढ़ते हो, 1967 छोड़ देते हो। फिर एक बॉर्डर स्किर्मिश होती है गलवान जैसी 1975 में। क्लियर? Is it the Tulung? There यस, was some तुलुंग। battle. यस, Yeah, तुलुंग बैटल, Tulung. है ना, Yeah. तुलुंग बैटल हुआ था। इट वॉज दी बॉर्डर स्किर्मिश। इसको हम बैटल नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? स्किर्मिश बोलेंगे। क्लियर? इट टुक प्लेस इन 1975। और फिर वैसा ही इंटेंसिटी का बैटल होता है 2020 में गलवान। क्लियर? तो ये सारे बैटल्स आपको पता होने चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि राजीव गांधी के एरा में क्यों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनाए जा रहे हैं, CBMs। क्लियर एवरीवन? तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा था लास्ट लाइन? सिक्किम, है ना। सो इंडिया, तो अब इंडिया की इस टाइम पीरियड में पॉलिसी क्या है? रीजनल हेजेमनी। फर्स्ट, इंडिया इंटरफेयर्ड इन ईस्ट पाकिस्तान। सेकंड, सिक्किम। तो ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हैं? रीजनल हेजेमोन। लिख लीजिएगा, इंडिया इंटरवीन्ड इन ईस्ट पाकिस्तान एंड लिबरेटेड बांग्लादेश। है ना। इंडिया दिसंबर 1971 में कहां पे गया था? ईस्ट पाकिस्तान में। बट जब वापस आया तो बांग्लादेश से आया, है ना। क्लियर? देन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजीव गांधी, इंडिया ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन श्रीलंका। रीजनल हेजेमनी। ये सारे इवेंट्स है किस चीज के? रीजनल हेजेमनी। लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग राजीव गांधी एरा, इंडिया सेंट विच फोर्स? IPKF। AF. इंडिया सेंट, Operation Power. हाँ, लिख लीजिए, इंडिया सेंट IPKF टू श्रीलंका बिफोर वेस्टर्न कंट्रीज सेंट इट्स फोर्सेस। Western countries sent its forces. This much is clear to all of you. Now tell me one thing, why Westphalian system is called as European? बताइए, why it is called as European? Okay, then US was not the participant, है ना, and it was in Europe, and whole world was the colony of Europe. This much is clear to all of you. ये याद रखिएगा, why Westphalian system is called as European. तो 2 reasons है.
US was not the participant and rest of the world was a colony. US was not a participant and rest of the world was a colony. So Westphalian order, next line में लिखिएगा, Westphalian order was regional in sphere. Was regional in sphere and it was based on the principle of sovereignty. Based on the principle of sovereignty. Based on the principle of sovereignty. Clear? Just go through it once. Based on the principle of sovereignty. एक बार रिवाइज करिए पूरा. क्लियर? तो अगर मैं आपसे फीचर्स पूछूं, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फर्स्ट फेज, दैट इज Westphalian order 1648 to 1919. What are the features? क्या क्या फीचर्स लिखेंगे? First thing is European centric in nature. European centric था ना, है ना? Politics among European nation. Second feature क्या लिखोगे? During this time period there was great power politics, है ना? Great power politics. That means it was dominated by powerful European nations only. Powerful European nations, है ना? Then another important concept in Westphalian order, अभी बताया था, balance of power was there, है ना? It was the key concept. Balance of power में there are two things. One is internal balancing, another external balancing. Internal balancing and external balancing, है ना? तो इस टाइम पीरियड में इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसिंग हमें क्या दिखेगा, बताइए? जिनका अभी रिसेंटली वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ है वो लोग बताएं. इंटरनल बैलेंसिंग फोकस ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल बैलेंसिंग फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन लड़ रहा है? अलायंसेस. ट्रिपल एंटार्ट एंड ट्रिपल अलायंस. क्लियर? इंटरनल बैलेंसिंग means focus on military strength, external balancing formation of alliances. क्लियर? तो ये किस मॉडल पे बेस्ड है? अभी मैंने बताया था, बिलियर्ड बॉल मॉडल, मल्टीपोलर इन नेचर, है ना? तो ये मॉडल किसने दिया है? बिलियर्ड बॉल मॉडल, आर्नोल्ड वॉल्फर्स. क्लियर? So it is based on billiard ball model given by Arnold Wolfers.
क्लियर? बिलियर्ड बॉल मॉडल में क्या था उस डायग्राम में? देयर इज नो सुपर पावर, देयर आर मल्टीपल पावर्स। क्लियर एवरीवन? इसमें लिख लीजिएगा, देयर इज नो सुपर पावर but countries clash like billiard balls. Countries clash like billiard balls. Countries clash like billiard balls in an anarchic world. In an anarchic world. क्लियर? एक बार रिवाइज करिए। तो यहां पर हमें बिलियर्ड बॉल मॉडल जो है, यहां पर सारी कंट्रीज आपस में कोलाइड क्यों कर रही हैं, क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? पावर, है ना? नेशनल पावर के लिए लड़ रहे हैं। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? है ना? तो किस चीज की स्ट्रगल है? स्ट्रगल फॉर पावर, और यू कैन से पावर स्ट्रगल। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, एवरी कंट्री वाज फाइटिंग ओनली फॉर पावर, है ना? एक बार रिवाइज करिए। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ मच पावर इज इनफ? बताइए, हाउ मच पावर इज इनफ? अब इंटरव्यू में पूछ लिया, तुम उनको पता चला कि तुम पीएसआईआर के हो, और उन्होंने पूछा हाउ मच पावर इज इनफ, तुम बोलोगे दिस मच, है ना? बताइए। Unlimited, sir. अनलिमिटेड? Struggle for power is it goes on forever. व्हाई अनलिमिटेड पावर? ओके, तो हमारे अंदर फियर किस चीज का है? सिक्योरिटी। एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, है ना, नथिंग इज इनफ। लिख लीजिए, एज फार, हाउ मच पावर इज इनफ, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, हाउ मच पावर इज इनफ? एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, नथिंग इज इनफ। अगर ऐसा होता तो यूएसएसआर 9,000 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद चुप बैठ जाता, है ना, और यूएस 8,000 के बाद, और दोनों को खत्म करने के लिए सिर्फ 2 ही बॉम्ब की जरूरत है। समझ में आ रहा है? 5 बॉम्ब फेंक दिए सो एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यूपीएससी सब ऐसे ही रह जाएगा, है ना? फिर मार्स का पेपर लिखना तुम लोग। लिख लीजिए, एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, नथिंग इज इनफ, है ना? अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ टू अचीव और बिल्ड पावर? हाउ टू अचीव और बिल्ड पावर? ये सभी को पता है, आपने पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ा हुआ है। देर आर 2 वे, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर। क्लियर एवरीवन? देर आर 2 वेज, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? सो हार्ड पावर इज कंसीडर्ड एज द अल्टीमेट पावर और मिलिट्री पावर और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी।
adopted by British during the colonial rule, है ना? क्लियर? तो अब अगर ये पावर डेवलप करना है, सो नेशंस हैड टू रिलाई ऑन इटसेल्फ. They need to create what? They need to create two things: internal balancing and external balancing. अभी लिखा था ना, internal and external balancing, है ना? So what's carrot and stick policy? Carrot and stick policy in the sense, for example, एक example से समझ लीजिए. Carrot in the sense to appease the people, and once they are going to appease, then they will make you to bend according to their will, है ना? कांग्रेस को कैसे रोका स्वदेशी मूवमेंट में? दे हैव अनाउंस्ड दैट मॉरले मिंटो रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विल कम, है ना? तो मॉडरेट्स खुश हो जाएंगे दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. स्टिक क्या निकाल दिया? सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स. अब तुम प्रोटेस्ट करते रहो, ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू लिसन यू, है ना? दैट इज कॉल्ड एज कैरेट एंड स्टिक. ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट चाहिए, तो प्रॉमिस किया, कैरेट दिखाया आपको कि वी आर गोइंग टू गिव यू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद रॉलेट एक्ट, ड्रैकोनियन लॉ, दैट इज द स्टिक. क्लियर एवरीवन? So this is soft and hard power. Now what is the objective of nation state? बताइए. What is the objective of nation state? अब समझिए, ये जंगल है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं यहां पर. ऑल दीज आर नेशन स्टेट्स, और सभी क्या करना चाहते हैं? सरवाइव करना चाहते हैं इस जंगल में. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन स्टेट? सर्वाइवल. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? तो अब ये एनिमल सरवाइव कैसे करेंगे? इनको कैप्चर कर लो एक प्लेटफॉर्म पे. और एनिमल्स को कैसे हम आज सरवाइव करवा रहे हैं? यही किसने कहा था? वुड्रो विल्सन. तो लिख लीजिएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन स्टेट? सर्वाइवल. सर्वाइवल. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू एंश्योर सर्वाइवल. कैसे आप सर्वाइवल करोगे? बताइए. बैलेंसिंग एंड हेजेमनी, दो ही इंस्ट्रूमेंट. क्लियर? तो हाउ टू एंश्योर सर्वाइवल. बैलेंसिंग एंड हेजेमनी. क्लियर? बैलेंसिंग कैसे आएगा? बैलेंस ऑफ पावर, हेजेमनी, आर्म्स, रेस. क्लियर एवरीवन? जितने ज्यादा वेपन, अगर पाकिस्तान के पास 100 है तो इंडिया के पास 110 होने चाहिए. समझ में आ रहा है? क्लियर? और एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो चाइना भी जाएगा, है ना? अफगानिस्तान भी चला जाएगा. क्लियर एवरीवन? एक बार रिवाइज करिए पूरा. तो यहां पर कौटिल्य को हमेशा कोट करिएगा. कौटिल्य क्या कहता है? दैट इंटरनेशनल रिलेशंस इज लाइक अ जंगल वेयर द पावर ऑफ लायन ऑलवेज प्रिवेल्स. समझ में आ रहा है? लिख लीजिए. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, according to Kautilya, the interstate relations are like jungle. Interstate relations are like jungle
where strength of line prevails, where strength of line prevails, where strength of line prevails. Full stop. Just go through it once. First phase of IR is completed, है ना? एक बार रिवाइज करिए, then we will discuss second phase after First World War. और जब भी अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी अप्लाई करना सीखना है ना, क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे वो चीज कि कैसे हम आज के इवेंट्स में इन थ्योरीज को अप्लाई करें। और जो भी ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं उस पर अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी देखनी है, देयर इज वंडरफुल वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट है EIR। समझ में आ रहा है? उस पर आपको अप्लाई जितने भी ग्लोबल इवेंट्स है, दिस EIR info, इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी अप्लाई किए हुए आर्टिकल्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? जो भी आपको ग्लोबल इवेंट्स पढ़ने हैं या बुक रिव्यूज देखने हैं, आर्टिकल्स, सब आपको इस पे मिल जाएगा। क्लियर? सो रिसेंटली गाजा इशू, उस पे कैसे IR की थ्योरी अप्लाई हो रही है। क्लियर? इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आपका IR थ्योरी से रिलेटेड आता है तो आप लेटेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यू कैन मेंशन लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, है ना? अब अगर आज के टाइम के क्वेश्चन में US इन्वेजन ऑफ इराक और कोल्ड वॉर लिखोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। क्लियर? बट अगर आपने लेटेस्ट एग्जांपल्स लिखे सो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। क्लियर एवरीवन? तो आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, है ना? न्यूक्लियर टैबू, तो स्ट्रेटेजिक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, UPSC पूछ सकते हैं। क्लियर? सो दीज थिंग्स आर देयर, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वेबसाइट। क्लियर एवरीवन? एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कभी भी प्रोजेक्ट सिंडिकेट मत देखिए। क्लियर? उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इस टॉपिक के लिए एक ही वेबसाइट है जो अच्छी है, दैट इज EIR। क्लियर? फर्स्ट फेज समझ में आ गया सभी को? क्लियर? नाउ सेकंड फेज। सेकंड फेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नाइनटीन 1939 है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री में इस फेज को और हम क्या कहते हैं? इंटर वॉर पीरियड। क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर वॉर पीरियड। This is also the period when in the world dictatorship came, that is Nazism
Fascism. So during this phase, so after the end of First World War, Woodrow Wilson, he came up with 14-point program. And because of this, the most important thing, that is liberal institution, was established, which is called as League of Nations. But so what was the objective of League of Nations? To prevent future wars. Objective क्या था? To prevent future war. But League of Nations was unable to prevent Second World War. So League of Nations model was a failure. Why it was failure? Though the model was given by United States of America, but US was not the member of League of Nations. Because membership or the bill which was proposed by Woodrow Wilson, it was not accepted by US Congress कि US इसका member नहीं बनेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस तो मेंबर थे. ब्रिटेन वाज द मेजर पावर एट दैट टाइम, बट ब्रिटेन एंड फ्रांस दे जस्ट वांटेड टू पनिश जर्मनी, है ना, दे वांटेड टू ह्यूमिलिएट जर्मनी, एंड दैट इज व्हाई दे हैव आल्सो नॉट टेकन द इनिशिएटिव टू स्टॉप द राइज ऑफ हिटलर एंड मसोलिनी. उन्होंने अपीज करना शुरू कर दिया था, जिसका आउटकम होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्लियर? तो लीग ऑफ नेशंस का ना ही यूएस मेंबर था, नाइदर यूएसएसआर. यूएसएसआर मेंबर क्यों नहीं है? बिकॉज यूएसएसआर बिकेम कम्युनिस्ट थ्रू रशियन रेवोल्यूशन. तो यूएसएसआर वाज आल्सो नॉट द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. तो टू सुपर पावर्स तो इसके मेंबर है ही नहीं. क्लियर? दैट इज व्हाई अनेबल टू प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ड्रॉ कर लीजिए. Clear? But US president gave this idea. अच्छा, what is the objective of US foreign policy? हमेशा से एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहा है यूएस की फॉरेन पॉलिसी का, टू बिल्ड यूएस हेजेमनी. क्लियर? द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी टू बिल्ड यूएस हेजेमनी. क्लियर? तो राइट डाउन. ड्रॉ कर लिए सभी ने? ड्रॉ कर लीजिए. सभी को करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स मिल गए? 71 पेजेस है ना, तो धीरे धीरे उसको रीड करते रहना. नेक्स्ट वीक तक अक्टूबर का अपलोड कर दिया जाएगा. क्लियर? डन. Now write down, during this period, during this period, during this period, League of Nations attempted to create new world order, attempted to create new world order with collective security, with collective security, with collective security, but it was failed due to US Congress opposition. It was failed due to US Congress opposition, comma, lack of commitment from Britain and France. Lack of commitment from Britain and France. Lack of commitment from Britain and France. तो जब आप
फ्यूचर वॉर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, वहीं पर नई आइडियोलॉजी आ जाएगी। और बैकग्राउंड में डिक्टेटरशिप भी आ रहा है ना, हिटलर एंड मसोलिनी। तो वहीं से धीरे धीरे राइज होना शुरू करेगा किसका? रियलिज्म का। राइज ऑफ रियलिज्म लिख लीजिएगा। दिस बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in the rise of realism. In the rise of realism. क्लियर? एक स्कॉलर है जिन्होंने एक बुक लिखी 20 years crisis 1919 to 1939। E.H. Carr's book, that is 20 years crisis। लिख लीजिएगा E.H. Carr's book, that is 20 years crisis। 20 years crisis, in which he critiqued idealism as unrealistic, which led to the beginning of realist school, which led to the beginning of realist school, who emphasize on power, self-interest, and skeptical about idealism, skeptical about idealism, full stop, change the paragraph. During this period, US tried to build hegemony, through the concept of free market economy in the world, but Britain was still maintaining the liberal international economic order. Britain was still maintaining the liberal international economic order in the name of Pax Britannica। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो जाएगा पैक्स अमेरिकानो। लिख लीजिएगा पैक्स ब्रिटानिका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक्स? PAX। पैक्स इंडिका। कुछ लोग बुक भी पढ़ रहे थे क्लास में। हाँ, तुम ही पढ़ रहे थे। मीनिंग बताओ उस बुक की। अब ये देखो, बुक पढ़ रहे हैं, मीनिंग नहीं पता है। पैक्स का मतलब होता है डिक्टेटेड पीस। लिख लीजिएगा पैक्स, PAX मींस डिक्टेटेड पीस। इट मींस डिक्टेटेड पीस। सो पैक्स ब्रिटेन का मतलब क्या है? रूल्स मेड बाय ब्रिटेन। लिख लीजिएगा रूल्स मेड बाय ब्रिटेन, and whosoever is going to break the rule of Britain, that will be punished, and whosoever breaks the rule will be punished by Britain, है ना? तो अब हुआ क्या?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन बिकेम वीक, तो अब यूएस ने कहा किसी को तो लीडरशिप संभालनी होगी, तो हम ही आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? सो यूएस केम फॉरवर्ड टू मैनेज द लीडरशिप। लिख लीजिएगा। है ना? और यूएस ने कोशिश की थी अपनी हेजेमनी बनाने की 1919 में थ्रू लीग ऑफ नेशन, बट यूएस के कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था मेंबरशिप के लिए। बट इस टाइम यूएस क्या करेगा? यूएस करेगा कि वी आर गोइंग टू क्रिएट ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, 1945 यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, and through those institutions US is going to maintain its hegemony. Clear everyone? लिख लीजिएगा। US tried to establish hegemony in 1919. US tried to establish hegemony in 1919, but US Congress did not approve. US Congress did not approve. So after Second World War, after Second World War, the new phase was started called as third phase. The new phase was started, third phase in international relations, 1945 to 1991. थर्ड फेज। क्लियर? अब फिर यूएस प्रेसिडेंट आएगा और बोलेगा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ऐसा ही कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी, है ना? सो न्यू यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, he gave the concept of new world order, which is based on Bretton Wood institutions. Bretton Wood institutions, IMF, World Bank, GATT, है ना? All these were Bretton Wood institution. और इसको रिप्लेस कौन करेगा? WTO in 1995। ड्रॉ कर लीजिए। This much is clear to all of you? तो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यूएस ने क्या करने की कोशिश की? यूएस ट्राई टू बिल्ड लिबरल ऑर्डर, बट was challenged by USSR। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई बाइपोलर, दैट इज टू सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर। ड्रॉ कर लीजिए। So what is the name of the president, sir? सॉरी, What is the name of the president, sir? Roosevelt. President. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, हाँ FDR। लिख लीजिए। This much is clear to all of you? And the moment the world became bipolar, so a conflict was started called as Cold War.
Cold War term coined by Walter Lippmann. Cold War means neither war nor peace. Clear? So here now world order became international. International क्यों हुआ? Because now it is not limited to Europe. Decolonization भी हो रहा है ना? Now it became global in nature. Clear everyone? Done? Now write down. World order became international. World order became international, which means not limited to Europe, which means not limited to Europe. Full stop. Cold War had divided the world. Cold War had divided the world into rival military blocks. Into rival military blocks. Into rival military blocks. So the status of other states. So the status of other states was like satellite state. Was like satellite state, where sovereignty lost relevance. Where sovereignty lost relevance. Clear? Who was superpower? US and USSR. What is the meaning of superpower? That means extraordinary capabilities. Clear everyone? So two superpowers were there. है ना? एक बार रिवाइज करिए पूरा. अब अगर मैं पूछूं आपसे, हाउ बैलेंस ऑफ पावर will be maintained between these two superpowers? Through, okay, पहले कैसे मेंटेन किया जाता था बैलेंस ऑफ पावर में, बताइए. हाउ बैलेंस और हाउ पीस विल बी मेंटेन बिटवीन टू सुपर पावर्स? हाउ पीस विल बी मेंटेन बिटवीन टू सुपर पावर्स? न्यूक्लियर बॉम्ब्स. दैट मींस न्यूक्लियर बैलेंस का कॉन्सेप्ट आ गया. क्लियर? लिख लीजिएगा. हाउ पीस विल बी मेंटेन्ड बिटवीन टू सुपर पावर्स. How peace will be maintained between two superpowers? How peace will be maintained between two superpowers? In this, write down. Instead of conventional balance of power, instead of conventional balance of power, the only way to maintain peace, instead of conventional balance of power, the only way to maintain peace, is nuclear balance. Maintain peace is nuclear balance. है ना? And this nuclear balance, Mutually assured destruction, MAD. yes, Basically. nuclear balance
can also be called as balance of terror. है ना? It can also be called as balance of terror. Why? Because it is based on MAD, mutually assured destruction. लिख लीजिएगा. It is based on MAD, mutually assured destruction. कि आप एक सुपर पावर को तभी रोक सकते हो जब आपके पास सेकेंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी अटैक करने की. समझ में आ रहा है? लिख लीजिएगा म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. It means one superpower can be prevented. It means one superpower can be prevented from attacking the other, only when the other superpower has second strike capability. Other superpower has second strike capability. It means nuclear arm race. It means nuclear arm race. क्लियर? अगर आपसे यूपीएससी पूछे हाउ टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, तो क्या लिखोगे? इट वॉज बेस्ड ऑन आर्म्स रेस. है ना? आर्म्स रेस ने ही पीस को मेंटेन करके रखा. So they are called, nuclear weapons are called as weapons of peace because they have established peace. Clear everyone? है ना? तो लिख लीजिएगा nuclear weapons established peace. So they are considered as ultimate weapons of peace. Considered as ultimate weapons of peace. क्लियर? तो ये कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में चल रहा है. व्हाट इज द अदर वे ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स? अदर वे ऑफ कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ना ही हम ये ज्वाइन करेंगे यूएस का ब्लॉक, ना ही यूएसएसआर का. तो इसी फेज में एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट इज नॉन अलाइनमेंट. This is the other way in this phase. Other way in third phase. Neither US nor USSR. And this will be called as third world nations concept. ड्रॉ कर लीजिएगा, थर्ड वर्ल्ड नेशंस. क्लियर एवरीवन? बट नैम का डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा 1970 से. क्यों? द मोमेंट इंडिया इज गोइंग टू साइन द ट्रीटी विद यूएसएसआर, so NAM got tilted towards second world, that is communist world. This much is clear to all of you. लिख लीजिएगा from 1970s NAM got aligned to second world.
that is communist world, that is communist world. So in this scenario, in this scenario, the debate was started between democracy versus dictatorship. Debate was started between democracy versus dictatorship, and India was the only exception. India was the only exception. है ना? अच्छा, how USA looked at NAM? USA used to consider NAM as Team B of USSR. समझ में आ रहा है ना? Either you are with me or you are my enemy. दो ही कॉन्सेप्ट हैं यूएस के. क्लियर? लिख लीजिएगा. How US looked at NAM, just like Team B of USSR. Team B of USSR. है ना? और थर्ड वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप भी आ रही है. डिक्टेटरशिप कैसे? बांग्लादेश, established by Sheikh Mujibur Rahman. He was assassinated in 1975. So in third world, बांग्लादेश में क्या आ गया? मिलिट्री रूल आ गया, डिक्टेटरशिप. Then Pakistan also was facing dictatorship, military rule. Clear? Same case in Southeast Asia also. Dictatorship was there. म्यांमार में हुंता रूल है ना. तो अब डिबेट क्या शुरू हो गई? डिबेट was started between democracy versus dictatorship. Clear? So it was like, so US looked at NAM as Team B, and another important thing was dictator countries or dictatorship countries, they were demanding democracy from United States of America. और इसीलिए यूएस साउथ ईस्ट एशिया की हेल्प करेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बनाएगा, आसियान. इंडिया को भी कहा था कि ज्वाइन कर लो, बट इंडिया डिनाइड बिकॉज इट वाज सपोर्टेड बाय यूएस. तो इंडिया आसियान का मेंबर कब बनेगा, कब ज्वाइन करेगा? 1992 when USSR got disintegrated. This much is clear to all of you. और इंडिया क्यों ज्वाइन कर रहा है? द रीजन इज इन 1967 आसियान वाज क्रिएटेड. बाय 1980s आसियान कंट्रीज वर कंसीडर्ड एज टाइगर इकोनॉमीज. सिंगापुर जैसे सिटीज एस्टैब्लिश हो गए. क्लियर? सो दैट इज व्हाई इंडिया आल्सो जॉइंड आसियान एज ए लिमिटेड डायलॉग पार्टनर इन 1992. क्लियर? 1996 में फुल टाइम मेंबर बना है, एंड फ्रॉम 2002 with ASEAN, India started East Asia Summit. हर साल होती है ना समिट. क्लियर है ना? ये याद रखिएगा. सो लिख लीजिए, राइट डाउन. सो फर्स्ट वर्ड टीम बी ऑफ यूएसएसआर. another debate was club of dictators demanding democracy. Club of dictators demanding democracy. First one was Team B of USSR. Second, club of dictators demanding democracy. Finally, in 1991, USSR got disintegrated. In 1991, USSR was disintegrated, which was the end of Cold War. Which was the end of Cold War. है ना? तब आया फेज 4. फेज 4, end of. so the Club of Dictators was the other name for Team B of USSR. It was like Southeast Asian countries जहां पे authoritarianism आ गया था. Clear? Okay. Now, end of Cold War. Again, the concept of new
world order by H.W. Bush, and world became unipolar. That is, only USA is the super power, and US talked about global interdependence, which means US is trying to promote what? Globalization, liberalization and privatization. ड्रॉ कर लीजिए, है ना? तो जैसे ही ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस आएगा और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा किस चीज का? ग्लोबल कोऑपरेशन. ग्लोबल कोऑपरेशन. क्लियर? तो अब यहां पर किसकी हेजेमनी स्टैब्लिश हो जाएगी? यूएस हेजेमनी. Why? Because the world order is unipolar, है ना? Unipolar world order है. Because of this, you'll see that US hegemony will be there from 1991 till 9/11 attack on US. And 9/11 attack on US and rise of China in 2000, that has challenged the view that world is no more unipolar, because for the first time US got a threat from non-state actors, terrorist groups. Clear? तो इस चीज पर फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या कहा था? एंड ऑफ हिस्ट्री. क्लियर? लिख लीजिएगा, फ्रांसिस फुकुयामा सेड, Francis Fukuyama said, this phase is the end of history. End of history. But from 2001 onwards, 2001 onwards, clash of civilization was started. Clash of civilization started, which was predicted by Samuel P. Huntington. Which was predicted by Samuel P. Huntington. Samuel P. Huntington. क्लियर? तो अब 2008 में क्या आ जाएगा? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एट द सेम टाइम राइज ऑफ चाइना, है ना? दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड. दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड. तो अब 1991 से 1991, नाउ नो मोर बिलियर्ड बॉल मॉडल. अब कौन सा मॉडल आ जाएगा? बताइए. अब कौन सा मॉडल आएगा? कॉबवेब मॉडल. लिख लीजिएगा, कॉबवेब मॉडल, है ना? कॉबवेब मॉडल कैसे? ऑल द स्टेट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर,
है ना, rather than separate billiard balls. All the states are interlinked in the name of globalization, है ना. Interdependency was established. लिख लीजिएगा. In this, states are interlinked like a web. States are interlinked like a web rather than isolated like billiard balls, rather than isolated like billiard ball. So it is more like multiplex world. It is more like multiplex world, which is more like multiplex world. Multiplex world के बारे में किसने कहा है? स्टीव स्मिथ. लिख लीजिएगा. इट इज मेंशन्ड बाय स्टीव स्मिथ. It is mentioned by Steve Smith, who described global and interconnected world. Who described global and interconnected world. Who described global and interconnected world. Clear? Now, what do you understand by post-American world? Post-American world का मतलब क्या है? Decline of West, rise of rest, है ना, like China and India. Decline of West, rise of rest. Clear? This was started after, that is post 2008. Why? Because of global financial crisis. Global financial crisis. Clear? तो रेस्ट का मतलब क्या है? 2008 में क्या आ रहा है? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. 9 ब्रिक्स. समझ में आ रहा है? और 10 पहले क्या था? ब्रिक था 2009 में. 10 में ज्वाइन करेगा साउथ अफ्रीका एंड इट विल बिकम ब्रिक्स. क्लियर? सो राइज ऑफ रेस्ट मींस राइज ऑफ ब्रिक्स. आज वेस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा ग्रुप है? ब्रिक्स. राइज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज. क्लियर? तो डिक्लाइन ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है? राइज ऑफ लिबरल, सॉरी, डिक्लाइन ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर. क्लियर? एसी चाहिए? तो बता दिया करो, उधर देखते हो, है ना. बार बार उधर ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये नहीं कि बोल दो. क्लियर? राइज ऑफ ब्रिक कंट्रीज. तो लिख लीजिएगा, राइट डाउन. ड्यूरिंग दिस फेज there was decline of liberal world order, decline of liberal world order, (1991) के बाद से वर्ल्ड कैसा हो गया था? मार्केट सेंट्रिक. जैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, फिर से स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड हो जाएगा. क्लियर? लिख लीजिएगा. Decline of liberal world order, that is countries revert to state centric, competitive geopolitics. Example,
Russia annexed Crimea in 2014. Russia annexed Crimea in 2014. क्लियर? तो अब एक स्कॉलर है जोसेफ नी, he mentioned post American world or after global financial crisis the world is like 3D chessboard. 3D chessboard का मतलब क्या है? World has unipolar component also, multipolar also, and diffused component also. कहा कि ये तीनों ही फीचर हमें दिख रहे हैं. यूनिपोलर क्यों? स्टिल मिलिट्री पावर जो है अभी भी यूएस के पास. समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिएगा जोसेफ नी 3D चेस बोर्ड. यूनिपोलर किस सेंस में? दैट आफ्टर 2008 ऑल्सो दिस मिलिट्री पावर इज स्टिल कंसेंट्रेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. है ना? मिलिट्री पावर यूनिपोलर में लिखिएगा, मिलिट्री पावर कंसेंट्रेटेड इन यूएस. मल्टीपोलर किस सेंस में? इकोनॉमिक पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट नेशन. चाइना भी आ रहा है ना? जर्मनी, इंडिया, जापान. क्लियर? लिख लीजिएगा मल्टीपोलर इकोनॉमिक पावर शेयर्ड बाय सेवरल नेशंस. शेयर्ड बाय सेवरल नेशंस. डिफ्यूज्ड, ये कौन सी पावर होगी? सोशियो कल्चरल पावर. डिफ्यूज्ड, diffuse socio-cultural influence spread across various groups and organization. Sir, could you say unipolar and multipolar once more? Unipolar, military power concentrated in US. Multipolar, economic power shared by several nations. 'Clear? 3D chessboard in the sense these three dimensions. हाँ, है ना? कि जब अगर हम बोल रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर में यूएस है, बट नॉट इन all the sphere, only in military sphere. When we say multipolar, that is related to economic sphere. Diffuse, socio-cultural. Clear everyone? Now if I ask you what is the difference between billiard ball model and cobweb model, दोनों में डिफरेंस क्या है? डायग्राम को देखिए, दोनों के डिफरेंस वहीं पे पता चल जाएगा. बिलियर्ड बॉल मॉडल में नेशंस आपस में लड़ रहे हैं, दैट इज स्टेट सेंट्रिक. कॉबवेब में नेशन इंटरकनेक्टेड हो गए, दैट इज सोसाइटी सेंट्रिक. समझ में आ रहा है? एक ग्लोबल सोसाइटी बन गई है, ग्लोबल मार्केट बन गई है ना? तो ये अपने समझ के लिए लिख लेना, है ना? बिलियर्ड बॉल स्टेट सेंट्रिक, कॉबवेब सोसाइटी सेंट्रिक. और अगर सोसाइटी सेंट्रिक है, दैट मींस अब खाली स्टेट बेस्ड नहीं है, देयर आर मल्टीपल चैनल्स ऑफ इंटरैक्शन. Sir, could you repeat it? लिख लीजिए कि बिलियर्ड बॉल मॉडल इज स्टेट सेंट्रिक, जहां पे स्टेट आपस में कोलाइड करते थे. कॉबवेब मॉडल इज सोसाइटी सेंट्रिक, है ना? इट इज नॉट लिमिटेड टू स्टेट, है ना? बट वेयर मल्टीपल एक्टर्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल सेंटर्स आर देयर टू इंटरैक्ट. तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे दोनों में डिफरेंस क्या है. क्लियर?
एक बार रिवाइज करिएगा सभी लोग। तो जैसे ही राइज ऑफ चाइना होगा तो वेस्ट एक नैरेटिव शुरू कर देगा और यूएस की फॉरेन पॉलिसी फिर चेंज हो जाएगी 2008 से। अब यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? साउथ एशिया में इंटरैक्ट विद इंडिया। समझ में आ रहा है? 2008 राइज ऑफ चाइना, 2008 जो यूएस हमें न्यूक्लियर वेपन के लिए मना करता था वो हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर रहा है। क्लियर? बिकॉज यूएस नीड वन पार्टनर इन साउथ एशिया टू काउंटर चाइना, है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट change which you will see in US foreign policy. क्लियर? तो 2008 से जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है इंडिया के लिए वो भी चेंज हो जाएगी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना। एक बार रिवाइज करिए पूरा। तो अब यूएस को अगर चाइना को एनिमी बनाना है, यूएस कभी नहीं चाहेगा कि चाइना एंड इंडिया शुड कम टुगेदर। So US will prepare one narrative, and that theory is only given by Western scholar, that is string of pearls. ये ना इंडिया की देन है ना चाइना की देन है। दिस नैरेटिव इज क्रिएटेड बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो व्हाट इज द ग्रैंड नैरेटिव ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर 2008? ग्रैंड नैरेटिव क्या बन गया? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना। दिस हैज बिकम द ग्रैंड नैरेटिव। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लिख लीजिएगा, द ग्रैंड नैरेटिव आफ्टर 2008। Grand narrative after 2008 was competition and conflict, between US and China. Post-American order. Yes, was competition and conflict between US and China. And this is based on Thucydides trap. This is based on Thucydides trap. Thucydides trap का यूज क्यों किया जाता है? It actually predicts the future aspect of great powers. Future relations कैसे होंगे? क्लियर? लिख लीजिएगा, Thucydides trap. It is a concept used to predict. It is a concept used to predict the future prospects. The future prospects of great power relations. Prospects of great power relations. So Thucydides trap एक चीज बोलता है, that the great power relations can never be peaceful. लिख लीजिएगा, the great power relations can never be peaceful. अब ऐसा क्यों होगा? Why the great power relations can never be peaceful? तो Thucydides trap कहता है that there are two types of power. One is status coerced power, another is revisionist power. और ये हमेशा लिखकर आता है न्यूज़पेपर में, status coerced power which is US and revisionist power China, है ना? स्टेटस कोएस्ट पावर का मतलब है एग्जिस्टिंग हेजेमनी कौन है? यूएस, है ना? रिविजनिस्ट पावर का मतलब क्या है? एस्पायरिंग हेजेमनी,
that they want to be hegemony. Clear? Revisionist power aspiring hegemony. This is existing hegemony. ड्रॉ कर लीजिए. So these both are types of power are according to Thucydides trap, right? Yes. Clear? But today world order is not simple. It is complex. Why it is complex? The reason is globalization. Whole world is interconnected. समझ में आ रहा है? Clear? लिख लीजिएगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन there is greater interconnectedness but during Cold War era there was no economic interdependence between US and USSR. Full stop. Today, there is a rise of global civil societies. है ना? और जैसे ग्लोबल सिविल सोसाइटीज राइज करेंगी, विच मीन्स राइज ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स, एमएनसीज क्या है? ट्रांसनेशनल एक्टर्स. लिख लीजिएगा. दैट इज वाई देयर is rise of transnational actors like MNCs, NGOs, role of terrorist organizations, etc. In this way, international politics looks more complicated and more pluralistic. More complicated and more pluralistic. क्लियर एवरीवन? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीरिया का सिविल वॉर. कैसे शुरू हुआ सीरिया का? अगर आप डेमोग्राफी देखें, गवर्नमेंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ शिया की पॉपुलेशन कितनी है? 30%. कॉमन पीपल अराउंड 67% सुन्नी. 3% और है, but they are not considered as people of Syria. They are stateless people. कुर्द. समझ में आ रहा है? कुर्द. And they are fighters also. Clear? तो अब जैसे ही सीरियन सिविल वॉर हुआ, गवर्नमेंट शिया was supported by Russia. Sunni, that means people supported by USA. और यूएस ने आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे दिए इनको. दे बिकेम ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया. समझ में आ रहा है? और भी पावर्स इसमें आ जाएंगी. रशिया सपोर्टिंग शिया, तो ईरान आ जाएगा सपोर्ट करने के लिए. जब ईरान आ रहा है तो यूएस को और सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया आ जाएगा.
कुर्द ये फाइटर्स हैं, ये एक और कम्युनिटी है कहां पर, टर्की में। तो टर्की इनको सपोर्ट करने आ जाएगा सीरिया में कि जाओ तुम लड़ो जाके कहां पर, सीरिया में। समझ में आ रहा है? इनको यूज किया जाएगा, बाद में इनको स्टेट भी नहीं मिलेगा, दे विल बी कंसीडर्ड एज स्टेटलेस। तो ये और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा टर्की में। समझ में आ रहा है? कुड दे विल बी डिमांडिंग स्टेटहुड इवन इन टर्की, है ना। तो टर्की एक चांस देख रहा है कि कैसे यहां हम अपने यहां से कुर्ड्स को निकाल के कहां भेज दें, सीरिया में। क्लियर? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दीज पावर। सो द अरब स्प्रिंग in Syria turned into Arab summers. Why? Because of civil war, and it was not successful in Syria. Clear everyone? ये सबसे बड़ा रीजन है सीरिया के बर्बाद होने का। क्लियर? तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, दिस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दिस इज प्लूरलिस्टिक इन नेचर। क्लियर? राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक टेररिस्ट ग्रुप। और ISIS इज नॉट लिमिटेड टू सीरिया, दे आर ट्रांसनेशनल। समझ में आ रहा है? कहां पर है? इराक में भी है ना, लेवांत रीजन में भी है, सीरिया में भी है, आज तो खुरासन में भी है ISIS के। समझ में आ रहा है? सो दे हैव बिकम ट्रांसनेशनल एक्टर्स। क्लियर एवरीवन? ड्रॉ कर लीजिए एग्जांपल। सो फेजेस आर ओवर, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार रिवाइज करिए पूरा। So now we are going to start with the theories of IR. So first theory that we are going to discuss, realism. Clear?
Whenever realism is there, that means it talks about power politics. It talks about national interest. And war. That is why in realism also there are various schools. Now we are starting theories of real IR, sir, Yes. section. तो क्लासिकल रियलिज्म का स्कॉलर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर? हैंस मॉर्गेंथ्यू. डिफेंसिव रियलिज्म, केनेथ वॉल्ड्स. हैंस मॉर्गेंथ्यू. for classical realism. Kenneth Waltz for defensive realism. Marsheimer for offensive realism. है ना? The neoclassical realism, Fareed Zakaria. Third world realism, that is Professor Amitav Acharya. Clear? And Morgenthau is also known as father of realism. Clear? He's also known as father of realism. Clear? And इन्होंने ही बुक लिखी है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस.
in 1949. Clear? Can you once repeat the scholar of offensive realism? Offensive realism, Mersheimer. Who? There is a difference. है ना? Political realism, which is related to the domestic politics, है ना? And international political realism, which is related to the international sphere. तो ओवरऑल पहली बार जो रियलिज्म की बात की वो किसने की? मॉर्गेंथ्यू ने. मॉर्गेंथ्यू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकियावेली. मैकियावेली ने भी की थी रियलिज्म की, है ना? बट उन्होंने कॉइंड नहीं किया था ये वर्ड रियलिज्म. कौटिल्य इज आल्सो कंसीडर्ड एज रियलिस्ट स्कॉलर. समझ में आ रहा है? क्लियर? नाउ so this, just imagine this international politics or the world politics is like giant jungle, है ना? और यहां पर हर कंट्री क्या है? अभी मैंने बताया था, एवरी कंट्री इज लाइक एन एनिमल, है ना? तो सर्वाइवल के लिए क्या करना है? सेल्फ हेल्प, है ना? तो फोकस किस पर होगा? टू क्रिएट फियर, पावर एटसेट्रा. और इन्हीं चीजों में रियलिज्म बिलीव करता है. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख लीजिएगा. तो अगर हम रियलिटी देखें, हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म कहां से शुरू होती है? रियलिज्म की हिस्ट्री कहां से शुरू होती है? कितनी भी बुक पढ़ोगे ना, तो दे ओनली दे टॉक दैट दिस रियलिज्म वाज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ मॉर्गेंथ्यू, है ना? तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो फर्स्ट रिपोर्टर ऑफ रियलिज्म वाज थूसीडाइड, जिन्होंने रियलिज्म की बात की. समझ में आ रहा है ना? ड्रॉ कर लीजिए पहले से. अब थूसीडाइड का जो कॉन्सेप्ट आया रियलिज्म को लेकर, वो क्यों आया? बिकॉज ही वॉच्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर कॉल्ड एज पेलिपोनेशियन वॉर, जहां पर एथेंस और स्पार्टा लड़ रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? और उस बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड किया था. बट इनकी थ्योरी जो थी रियलिज्म की, वो ओवरशैडो किसने कर दी? सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे स्कॉलर्स ने, आइडियलिज्म को प्रमोट कर करके. समझ में आ रहा है? इसीलिए जब भी रियलिज्म की बात होती है, हमें थ्यूसिडाइड्स का नाम लिखना पड़ेगा. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? बिकॉज ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर, दैट इज द वॉर बिटवीन एथेन एंड स्पार्टा. लिख लीजिएगा, थ्यूसिडाइड वॉज्ड एथेंस एंड स्पार्टा. एथेंस एंड स्पार्टा. और बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है थ्यूसिडाइड ने. क्या लिखा है? द स्ट्रॉन्ग डू वॉट दे कैन, और जो वीक है वो सफर कर सकते हैं. ये किसने लिखा है? थ्यूसिडाइड ने. लिख लीजिएगा डबल कोट्स में, द स्ट्रॉन्ग डू वॉट दे कैन, द वीक सफर, द वीक सफर वॉट दे मस्ट. क्लियर? तो थ्यूसिडाइड ने क्या देखा अपने टाइम में?
दैट स्टेट जो है, सिटी स्टेट है ना, दे फियर ईच अदर, क्लियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर they focus on creating more power, है ना, जितना ज्यादा फियर है उतना ज्यादा आप अपनी पावर को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब जब पावर ज्यादा क्रिएट होगी, अब सारे ही स्टेट क्या कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग मोर पावर, सो मोर पावर क्रिएट्स मोर फियर। समझ में आ रहा है? मोर पावर क्रिएट्स मोर फियर। फॉर एग्जाम्पल, यूएस को डर कब लगा कि न्यूक्लियर वेपन अब खतरा बन गया है? जब यूएसएसआर ने बनाया, फिर चाइना ने बना लिया, समझ में आ रहा है, फिर फ्रांस ने बनाया, यूके ने बनाया, है ना, इन सभी ने बना लिया। तब जब 5 कंट्रीज ने बना लिया, तब लगा इनको कि अब और कोई नहीं बनाना चाहिए, है ना, तो उन्होंने एक क्या बना दिया, ट्रीटी बना दी, एनपीटी। क्लियर? व्हाई? बिकॉज मोर पावर क्रिएट्स मोर फियर। ये याद रखिएगा। तो इसका आउटकम क्या होगा? इफ मोर पावर क्रिएट्स मोर फियर, सो द रिजल्ट विल बी आर्म्स रेस। तभी तो आर्म्स रेस शुरू होगी। तुम 100 बनाओगे, हम 101 बनाएंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड एज आर्म्स रेस। ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। क्लियर? तो ये जो फियर की साइकिल है, शुरुआत कहां से हुई थी? फियर से, और खत्म भी कहां पर हो रहा है? फियर पे। दिस साइकिल ऑफ फियर इज कॉल्ड एज थूसीडाइड ट्रैप। समझ में आ रहा है? दिस साइकिल ऑफ फियर थूसीडाइड ट्रैप। क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आर्म्स रेस क्यों चल रहा है? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा जियोपॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी डायलेमा। क्लियर? इट इज ड्यू टू सिक्योरिटी डायलेमा, ड्यू टू सिक्योरिटी डायलेमा। क्लियर? तो जब भी हम क्लासिकल रियलिज्म की बात करते हैं, हम सीधे किसको कोट करते हैं? मॉर्गेंथ्यू को। बट क्लासिकल रूट्स आर गिवन बाय हुम? समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, क्लासिकल रूट्स आर गिवन बाय थूसीडाइड्स। क्लियर? बस ये लिख लीजिएगा, क्लासिकल रूट्स आर गिवन बाय थूसीडाइड्स। क्लासिकल रूट्स आर गिवन बाय थूसीडाइड्स। क्लियर? तो अब ये रियलिज्म डिक्लाइन कैसे हो गया? जो थूसीडाइड ने क्रिएट किया था, ये डिक्लाइन कैसे हो गया? पैक्स रोमाना, रोमन एम्पायर, देयर इज ओनली सिंगल लायन इन द जंगल, एंड क्रिश्चियनिटी ने इस आइडिया को स्प्रेड कर दिया दैट एवरीवन इज वन फैमिली, दैट वाज रोमन एम्पायर। तो वहीं पर डिक्लाइन किस चीज का हो गया? डिक्लाइन इन रियलिज्म। व्हाई? बिकॉज ऑफ रोमन एम्पायर, दैट इज पैक्स रोमाना। पैक्स का मतलब डिक्टेटेड पीस, है ना, पैक्स रोमाना। क्लियर? तो यहां पर एक ही इंसान है, रोमन एम्परर। सो वन लायन डोमिनेटिंग द जंगल।
है ना, और सपोर्ट किसने कर दिया? रिलीजन ने, दैट इज क्रिश्चियनिटी, that everyone is one family. Everyone is one family. क्लियर? तो इससे क्या हुआ? रिलीजन वॉज डोमिनेटिंग इन मेडिवल टाइम, है ना, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन वर टुगेदर। कम बैक कौन करेगा? मैकियावेली, है ना, कम बैक कौन करेगा? मैकियावेली, जिसने पहली बार आइडिया किस चीज का दिया? सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, क्लियर, एंड एथिक्स। सो मैकियावेली कम बैक, है ना, क्लियर। और मैकियावेली क्या बोलता है? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है रियलिज्म की। इट टॉक्स अबाउट नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर, है ना। सो मैकियावेली क्या कहता है? रूलर और प्रिंस मस्ट प्रोटेक्ट पावर, नॉट मोरालिटी, है ना, मस्ट प्रोटेक्ट पावर नॉट मोरालिटी। तो अब अगर पावर को प्रोटेक्ट करना है, वॉर इज नॉर्मल, है ना, वॉर इज नॉर्मल, सो वॉर इज ग्लोरिफाइड बाय द रियलिस्ट स्कॉलर्स। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लिख लीजिएगा, वॉर इज नॉर्मल, है ना। तो मैकियावेली ही कहता है प्रोमिसेस कैन बी ब्रोकन इफ नेसेसरी, सो नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज। और यही किसने कहा था? कौटिल्य, है ना। Promises can be broken if necessary, है ना। तो मैकियावेली ने एक बहुत ही अच्छी चीज बोल दी, डोंट बी अ रैबिट, आइदर बी अ फॉक्स और लायन, है ना। प्रिंस Sir, should Kautilya be also like, said the same thing. Promises can be broken if necessary. yes, clear everyone? तो बेसिकली आपका जो आईआर का थ्योरी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉर्गेंथ्यू। मैं ये सारे स्कॉलर्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सेक्शन ए जो पेपर 1 है उसको भी अप्लाई करिए यहां पर, है ना। फिर इसके बाद अब आप किसको लिख सकते हैं? थॉमस हॉब्स। कैसे अप्लाई करेंगे बताइए? हॉब्स किस बारे में बात कर रहा है? फियर, है ना। वो बेसिकली ये बता रहा है स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ वॉर। तो वो हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है व्हाई दिस जंगल एग्जिस्ट, बिकॉज देयर इज एनार्की इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हिज स्टेट ऑफ नेचर वॉज स्टेट ऑफ एनार्की, फुल ऑफ वॉर, है ना। सो थॉमस हॉब्स, why necessary, है ना। और एक चीज और आप लोग सीख लीजिए एग्जाम के लिए, ट्राई टू यूज एनालॉजीज। समझ में आ रहा है? ऐसे पेपर में अगर एनालॉजी नहीं लिखोगे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये याद रखिए। क्लियर? एथिक्स में एनालॉजीज का यूज करिए। तो जब आपके बुक्स में इवन रिलीजियस स्क्रिप्चर एनालॉजीज यूज करते हैं तो आपको भी यूज करना आना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मूवीज देखा करो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा आज के टाइम में, है ना, तब कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर?
तो थॉमस होब्स, वाई जंगल एग्जिस्ट और नेसेसरी, है ना? तो लिख लीजिएगा, होब्स सेड inside a country we have a king or order, but between countries there is no king, or order which creates the situation of anarchy, है ना? So countries they act like gladiators, है ना? हमेशा एक दूसरे को सस्पेक्शन से देखते हैं. This much is clear to all of you? तो लिख लीजिएगा, in this way he also warned, no world government is possible, because we cannot have a king over all kings, over all kings. We cannot have a king over all kings. This much is clear to all of you? तो ये सिनेरियो रहा. फिर उसी के बाद थॉमस होब्स के टाइम पीरियड में एक ट्रीटी आ जाती है, वेस्टफेलियन ऑर्डर बनता है. वहीं पर डिक्लाइन किस चीज का हो जाता है? रियलिज्म का. अब रियलिज्म हमें कहां पर रिवाइव होता हुआ दिखेगा? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्लियर? नाउ राइज ऑफ वेस्टफेलियन ऑर्डर 1648, है ना? वेस्टफेलियन ऑर्डर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर दिया? सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन. तो यहां पर रिलीजन क्या हो गया? रिलीजन हैज बिकम इंटरनल अफेयर, है ना? नाउ रिलीजन विल नॉट बी डोमिनेटिंग इन दी सीन. क्लियर? सेकेंड, sovereignty which says that all states are equal and they have their own supreme law, है ना? So all states are equal and independent, है ना? ये किसने कहा? सोवरेनिटी ने. क्लियर? एंड देन वेस्टफेलियन ऑर्डर क्रिएटेड व्हाट? बैलेंस ऑफ, अभी हमने पढ़ा था ना, बैलेंस ऑफ पावर, बिलियर्ड बॉल मॉडल. क्लियर? बैलेंस ऑफ पावर. तो इससे क्या होगा? किसी एक की डोमिनेंस नहीं रहेगी, है ना? बैलेंस ऑफ पावर प्रिवेंटेड डोमिनेंस ऑफ वन, ड्रॉ कर लीजिए. क्लियर? तो अब इससे क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पावर इट रिजल्टेड इनटू टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पावर. तो आप देखिए, बैलेंस ऑफ पावर ही लड़ रहा है. ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ट्रिपल अलायंस एंड एक्सिस पावर्स. क्लियर? बैलेंस ऑफ पावर में ही क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो अब जब ये बैलेंस ऑफ पावर फेल कर गया
तो स्कॉलर्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रिव्यू द प्रीवियस थ्योरीज एंड देन रिवाइवल ऑफ रियलिज्म। समझ में आ रहा है? सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिवाइवल ऑफ रियलिज्म। तो अब कॉन्सेप्ट आएगा रियलिज्म का। हु इज द फादर ऑफ रियलिज्म? हैंस मॉर्गेंथ्यू, फादर ऑफ रियलिज्म, है ना? एंड ही गेव द मॉडल ऑफ क्लासिकल he gave the model of classical realism, है ना? तो ये मॉडल इन्होंने कहां पर दिया? अभी मैंने आपको बताया, he has written a book called as Politics Among Nations, book Politics Among Nations, 1948 to 49। ड्रॉ कर लीजिए। So he is the father of modern realism। समझ में आ रहा है? मॉर्गेंथ्यू। तो मॉर्गेंथ्यू ने क्या कहा कि हमें आइडियलिस्ट बनना बंद करना होगा। हम आइडियलिस्ट रियलिटी में है नहीं, है ना? ह्यूमन नेचर ऑलवेज वांट पावर। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वी नीड टू स्टॉप बीइंग आइडियलिस्टिक इन नेचर। तो इन्होंने